Hello and welcome to Saif Classes. In this tutorial, I am going to explain how to make a menu-based program. This is the second video in the series of menu-based programs. Here I am going to explain you area of rectangle, perimeter of rectangle, and simple interest also in the menu-based program. So let's start the video. This is the basic code. Just I have pre-written the code in order to save the time. Now here, first of all, we have to make a menu, right? So we are making a menu here, and then we will proceed further. So this is what I need. In this particular menu, I need 4 inputs, one for area and other for perimeter, and third is for simple interest. We can make any program, whatever we need. So this is for the first thing what I am writing here. Let's say main menu. It's not necessary in the exam also, but because I have a time, so I can do it. Okay, so first is what? Area of rectangle, right? Second one is second option. Two is for what? Perimeter of rectangle, right? And the third one is for simple interest. Okay, now we have printed all the 3 messages. Then fourth one, that is I have to read a choice from the user. So enter choice, and that would be 1 is to 3 because we have 3 valid choices. And then I need an input from user. So for that I have already taken integer in a scanner class. So I'm taking an integer ch is equals to sc dot next int. So this only I'm going to run it so that the things will be very clear to you side by. So I'm creating a class over here, that is menu. Let's say menu 3. Okay, so this is menu basically 3, and here I've written Saif. It is identifier, a variable, anything you can use. It's a command line prompt. I'm not explaining this right now. It perfectly runs, no problem. Okay, so let's run this, but this much code. Let me see the size. Okay, Control K, no error. Going there, run the program. See, no problem. So it is showing me this is the menu, and it is asking the value also. And I am giving, let's say 2. So it is taking the values. Now I have not written the code. I'm changing the code right now. So very simple, because it should be switch in bracket ch like this. So we are going to create a basic framework of the menu program. Case 1. Why? Because in case 1 we are supposed to print area of rectangle task. So here I am printing it first. Okay, this much only, and then break. Similarly, second case, I am not writing the entire program of the area of rectangle, but I am first of all checking whether my framework, whether my entire block is okay or not. Okay, if it is going to print area of rectangle, I can add further lines of this program. Okay, and the things will be under control. Right now I'm checking whether it is going. So always whenever you write a program, you have to move step by step. It is not that you simply writing from top to bottom like a essay on a cow. Then the last one, that is valid case 3. Again break purposely. So I know it is nothing is there after the default, but yes, we can write anything after the default also. It's not wrong. But here, as per the question, all the cases and the default is completed. Now to check this. I want to check this. Okay, I want this run. Now it is printing area of rectangle. If I'm going to give 1, so it is showing me area of rectangle. Matlab, mera code chal raha hai. Okay, once again I'm run the program. Run 2 for should show perimeter of rectangle. Done. Once again, third, enter. 3, simple interest, correct. 4, once again, and I'm giving here, let's say 5. So invalid choice. So it is perfectly running. Now what is my job? My next job is to
एक्सटेंड माई कोड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कोड लिखना है, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ यूजर से लेनी है और उसका काम कंप्लीट करना है. सो आई एम गोइंग टू डू दैट, वेरी सिंपल. ओके, सो आई वुड एडवाइस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स के जितने भी वेरिएबल चाहिए आप सोच के ऊपर ले लो. मतलब जहां पर भी एक्यूरेसी की बात आएगी आप इंटीजर मत लो, आप डबल लो. जैसे अब आपको लेंथ और ब्रेथ में एक्यूरेसी होती है उसमें डबल ले लो. चॉइस हमेशा पॉज हम लोग नॉर्मली इंटीजर्स में लेते हैं, तो हमने चॉइस ऐसे ले ली. मैं भी इसी में एक चेंज करूंगा, ठीक है, अभी मैं चेंज करूंगा, लेकिन अभी 2 मिनट मुझे. दैट इज L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, आई एम टेकिंग area is for area and peri for perimeter. That's it, because I need to calculate the perimeter also ना. अच्छा, area of rectangle आने के बाद I need to take the value from the user. So I need to write a statement. So I'm just printing it. Enter length. मैसेज कुछ भी हो सकता है लेंथ समझाने के लिए, लेकिन जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे तो हम इंटीजर एल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एल डिक्लेयर करना है. एल इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल. क्यों नेक्स्ट डबल लिख रहे हैं चेक कर लो आपको ऊपर जाके. देखो हमने सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था SC. हम कुछ भी बना सकते हैं. चलो कहते हैं SC क्यों लेते हो आप इसका आप लेट से कोई और ले लो, लेट से OBJ ले लो. तो मैंने OBJ ले लिया. अब मेरे पूरे प्रोग्राम में OBJ चलेगा. अच्छा सर आपने स्टार क्यों लिया? भाई अगर आप स्टार ले लोगे तो भी इसके अंदर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी, और अगर आप स्टार ले लेते हो तो सिर्फ स्कैनर क्लास नहीं, यूटिल सब पैकेज में जो कुछ होगा वो सब इंपोर्ट हो जाएगा. और याद रखो ये प्रिंट एलन, ये जितना भी तुम्हारा डबल है, इंट है, इनकी भी तो कहीं वर्किंग लिखी होगी. वो वर्किंग कहाँ लिखी है? एक मेन्यू, एक पैकेज होता है जिसका नाम है java.lang. सब कुछ उसके अंदर लिखा है, याद रखो. जैसे हमने आपको मैथ क्लासेस पढ़ाई थी, वो सारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? java.lang क्लास के पैकेज के अंदर पड़ा है, और उसकी क्लास का नाम है मैथ क्लास. ठीक है, क्लास का नाम मैथ है, याद रखना. क्लास नेम मैथ है, और पैकेज नेम क्या है? पैकेज नेम है java.lang. ये क्या है? पैकेज. तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के बहुत माइन्यूट टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बच्चों के नंबर 60 मार्क्स में नहीं जाते. दे लूज देयर मार्क्स इन 40 मार्क्स सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2. MCQ डीप में पढ़ना पड़ता है, स्टेप मार्किंग होती नहीं है, मार्क्स चले जाते हैं. इसलिए लाइटली मत लेना इन सब चीजों को. ये सब ऑप्शनल था, समझाया था, इसलिए वीडियो पूरा देखा करो. ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? OBJ. ओके, अब हम यहाँ क्या लेंगे? SC की जगह पर OBJ, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बैठे कि नहीं SC लेते हैं. नहीं भाई, SC नहीं लेते. इट्स नॉट कंपल्सरी ऑलवेज. नाउ सिमिलरली आई एम गोइंग टू कॉपी दिस ऑल एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट. For what? To read the breadth. I need a breadth also. BREADTH, breadth. And this will be stored in B variable, capital B. You can take any variable, but I'm taking a mnemonic variable, L for length and B for breadth. Now last line. Sir, area is a formula L into B. So why to take any other things? What I'm doing is, just 1 minute. I'm writing here. That's okay. Area is equals to L asterisk B. That will be, oh sorry. Here I'm writing B. Okay, and then I'm printing it. System. This has to be done. Okay, now it is completed. Shall I check this program whether it is running or not? I would advise you, whenever you read the value, take a value from keyboard. Please use print, not println. Okay, so it will show you the output and the input in the same way. And I'm just showing the program. Going back, just 1 minute. Execute the program like this. So 1, yeah, it is running. It is asking the length. Let's say 10 is the length. Breadth, let's say 4.1 is the length. So answer is 41.0. This is area of rectangle program has been running now successfully. Now similarly, I have to add further code in order to make the program. So it's very simple, and there is no curly braces. Okay, some of the students are asking, sir, curly braces नहीं लगाया आपने. भाई क्यों लगाएंगे curly braces? जरूरत ही नहीं है. Okay, so I'm copying the thing again and same code. आप गैप भी दे सकते हो. ठीक है, आप ऐसे करके गैप भी दे सकते हो. ऐसे देखो, मैं गैप देता हूँ. ठीक है, मैं ऐसे करके गैप दे सकता हूँ. ये देखो, ताकि पता चलता रहे केस 1 केस 2 से अलग है. क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करो तो हर चीज अपने हिसाब से एडजस्ट करो. अभी आपको कोड समझ में आया, भाई आपको ही समझ में नहीं आया कोड और आप ही उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर बाकी बंदे को कैसे आपका टीचर पढ़ेगा. इसलिए कोड हमेशा प्रॉपर इंडेंटेड होना चाहिए एंड इट शुड बी रीडेबल प्रॉपर. ओके, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इंडेंटेड कोड, रीडेबल कोड. अच्छा, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आया, मैं क्लास में अवेलेबल हूँ, मैं अपनी लैब में अवेलेबल हूँ. यू आर अलाउड एनी टाइम टू आस्क मी the question, the doubts. I will definitely answer you. Don't hesitate while asking the questions. ठीक है, डांटूंगा नहीं किसी को, याद रखो. वैसे भी मैं डांटता नहीं, तो पढ़ते नहीं बच्चे तभी मुझे गुस्सा आती है. Okay, so just this is enter the length, again same, breadth, again the same statement,
Now I need to calculate the perimeter. So for that I have taken peri variable. You can take any other variable. 2 asterisk in bracket L plus B, yes, semicolon, and again I need to print the output. What is that? System.out, and the variable name is peri. Please remember, my P is capital. Use the proper spelling in cases in order to run a proper program. Now we are going to check this program whether it is working or not. Again, running the program, enter. Option 2, yeah, length. Let's say 12 is the length and 5.5 is the breadth, and the answer is 35.0. Whatever, this is correct. So I hope it is clear to every student. Now we are moving further into the program. And sir, can you write a simple interest also? Yeah. Now I have to declare further more variables for simple interest, and I am declaring the variable over here, double, let's say P for principal, or let's say PRIN for the principal amount, and for rate I am taking rate, and for the time I am taking TIME time. Okay, I would advise you to use a proper variables, not very lengthy, but should be meaningful. Should not use x, y, z. Use always mnemonic variables, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाए कि टाइम इसमें मतलब पक्का टाइम रखा होगा, इसमें रेट स्टोर किया होगा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा. अब अगर हम इसको x, y, z कर देंगे तो पता नहीं होगा x में रेट है कि टाइम है कि प्रिंसिपल है. Hope that it is clear. Very simple. Again, same logic. I'm going to copy the content, and here principal amount, rate and time. Saving the time and copying the content and just editing the given code. Please go through all these things. जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं इसमें अच्छी तरह से पढ़ लो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए. PRINCIPAL. Okay, principal. Divide by 100. I would advise you to use parenthesis. Parenthesis. This should be inside the parenthesis like this. It is better. It is better. Okay, क्योंकि आगे जाके प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. आपको अगर इसकी आदत नहीं होगी तो आपके आंसर गलत है. ठीक है, जैसे मैं पूछूं 3 + 3 डिवाइड बाई 3. अभी आपको पता है कि डिवाइड पहले चलेगा, लेकिन 3 + 3 पहले लिखा हुआ है. धोखा खा जाते हैं बहुत से लोग, 6+ वो करने लगते हैं. इसलिए 3 + 3 का आंसर एग्जैक्टली वो नहीं आएगा जो बहुत से लोग सोचते हैं. ओके, एंड देन फाइनली आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. And you see the output, check the output. Okay, and we have default control K, file, run. Okay, and here I'm giving option 3. It is asking me a principal amount 5,000, rate let's say 2.5, time let's say 3, and the value is 375.0. This is the answer of simple interest. So I hope you have understand what is how to make a menu based programs and all that. There will be a little change, that is these kinds of programs will be asked with different types of questions, but I have given a quite good idea. So please keep watching the videos, and if you have any confusion or doubt, please don't hesitate to write the comments or ask me in the school. Okay, thank you for watching the video.